आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो लैब्राडोर रिट्राइवर है वो सबसे ज़्यादा सर्च डॉग माना गया है यूएस में। इसमें ये नोटिस है जो कि कैल्विन एडजे डार्को ने दी हुई है। ये 3 जुलाई यानी है। द लैब्राडोर रिट्राइवर हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर डॉग इन द यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग द कोरोना वायरस। A study shows the dogs, which are known for their assistance skills, enjoyed a surge of interest since the lockdown was announced on March 23. He's very cute. As many people were advised to either work from home and several other interest in dogs for company grow significantly. Head of Health and Welfare at the Kennel Club, Bill Lambert said, the Labrador is one of the most popular decades. They are an affectionate and loyal all-rounder. As many people were advised to either work from home and several dogs, other followed interest in dogs. वो दिस इज़ द चार्ट। ये चार्ट देखिए। अच्छा 26 जून को कम हुए, लेकिन लैब्राडोर रिट्राइवर ही था 30 में लास्ट में, यानी यही सबसे बेस्ट था। डाटा ऑन गूगल ट्रेंड्स सो द लैब्राडोर रिट्राइवर सॉ अ स्पाइक इन सर्चेज which peaked on May 30 with a volume of 72. The Labrador's closest search competition is the Cocker Spaniel and Dachshund. Whoa, so cute. Wow. Reports indicate that the UK may face a shortage of puppies as a result of the rising demand for dog companions, which is of great concern to Mr. Lambert. He said when demand for dogs outstrips the available supply, we always have concerns that people might start to look for puppies from lower welfare sources, including imported from overseas. We also know that some countries don't always have the same animal welfare standards or legal protection as the UK, which can result in imported dogs and puppies suffering due to breeding conditions. Experts have also warned against potential owners getting a dog only for the lockdown. As the lockdown eases and the UK begins to get back to normal, the search for dogs sees a decline, with the search volume for the Labrador Retriever falling to 55. A dog is for life. Experts have warned this. Mr. Lambert said he can understand why many people would want to get a puppy now, as they have such a positive impact on well-being and mental health. Please don't make a decision to get a pet just because you are at home now. You need to make sure you can properly care for a dog for itself, including when we go back to normal, he said. RSPCA's dog welfare expert Dr. Samantha Gaines said, it's important to think about your previous lifestyle and whether you would have been able to get a puppy at that point. As well as being wonderful and very rewarding in many ways, puppies are messy, noisy, destructive and very demanding of time and energy on a daily basis. तो बस इसका सिंपल सा यही मैसेज था कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में जब लॉकडाउन हुआ तो लोग जब खाली हुए, कुछ करने को था नहीं, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा डॉग्स को पाला, डॉग्स को अडॉप्ट किया। लेकिन वो सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लैब्राडोर्स थे और उसके अलावा भी दूसरे और भी डॉग्स थे। लेकिन उसकी वो प्रॉपर केयर स्टार्टिंग में तो किए, लेकिन बाद में कर नहीं सके। इसीलिए जो रिसर्च है उन्होंने यही कहा कि आप जब भी डॉग लें तो एक बार पहले सोच लें कि आप लोग उस डॉग की प्रॉपर केयर कर सकते हैं, तभी उसे अडॉप्ट कीजिए। पूरी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं केवल डॉग्स नहीं बल्कि उससे ज़्यादा होते हैं। जब आप उनको ले लोगे तो वो आपके लिए डॉग से भी ज़्यादा उनकी वैल्यू होगी। आप नहीं जानते एक डॉग की जो वैल्यू होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। ये तभी आपको पता चलेगी जब आप उसको अडॉप्ट करते हैं। थैंक यू एंड गिव फूड टू होमलेस डॉग्स। गुड बाय।